Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our next lecture, and the title is Computers in Healthcare. So, first of all, overview of the lecture. करेंगे क्या इसमें, हम पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन, लाइक what are different websites, how information is there, what people look at, and what are online communities of health. Then we look at the electronic medical records, EMRs, ये क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स में क्या फ़ायदा है इनका. इसी तरह पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं. देन वी गो टू डिजीज सर्वेलेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, व्हेन दे आर लर्निंग दे यूज सम मेडिकल सिमुलेटर्स, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि हाउ डज इट हेल्प देम टू वर्क efficiently. Moving on further, हम देखेंगे artificial body parts and organs, which is becoming very common. People are getting these organs. Uh, then, very interesting topic that we are going to study is about precision medicine. That's something new, relatively new. That is something which is not yet done, but we will look at it. और फाइनली थोड़ा बहुत ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर, एंड देन फाइनली वी विल एंड विद robot companions for senior citizens. So let's start with सबसे पहले health information. So before the internet, how do you think people would learn about health issues and diseases? How could they find it about the details of the diseases? जैसे आजकल कुछ होता है तो आप फौरन जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, लेकिन जब नहीं था तो कैसे लोग करते थे? Obviously they would have gone to libraries and bookstores to find information like of basic stuff like flu, like polio, like some other stuff, even headache. uh, सो बेसिकली इंटरनेट से पहले हमारे पास कोई जरिया नहीं था, तो लोगों के पास क्या था जी, लोग चले जाते थे लाइब्रेरीज में, किताबें देखने के लिए. किताबों में बड़ी इंफॉर्मेशन है जी, वहीं से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं आप, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं. यस. So most of the information in medical books is incomprehensible to common person. Yeah, that's important. कि जाहिर बात है, मेडिकल की जो किताबें हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए लिखी गई हैं, वो वही लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है ना. तो आम बंदे के लिए वो इंफॉर्मेशन वहां से निकालना जो है वो जरा मुश्किल हो जाता है. दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल. अब आपको सर दर्द के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर, वेल आई नीड सम इंफॉर्मेशन, डॉक्टर्स डोंट हैव टाइम फॉर दैट. तो ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है ना, उस जमाने में, और डॉक्टर्स के लिए भी जारी बात है बहुत मुश्किल था. सो ओनली दोज पीपल हु आर वेल एजुकेटेड एंड हु हैड एक्सेस टू बुक स्टोर्स एंड लाइब्रेरीज वुड गो एंड गेट इंफॉर्मेशन. वेल, internet changed all this. Yes, that's what happened. इंटरनेट की वजह से रेवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. नाउ, online health information, a little bit basics, yeah, background about it. You can see internet आता है, early 90s में introduce होता है. Within 10 years time, just imagine, around 70,000 websites with health information that are used by around 50 million people in the world. Just imagine, 10-12 साल में जब इंटरनेट आता है, how much information, especially health related, जो है वो आपके पास online available हो जाती है. 77% of those who use that information to consult their physician about the problems, so उन्होंने पहले इंटरनेट पे देखा और फिर अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया. Another study found that in 2003, around 4.5% of all web searches were health related. Imagine, over 6 million, up to quarter to 7 million searches a day were actually health related. Similarly, 2011 में 80% of US residents, यानी US citizens जो अमेरिका में रह रहे हैं या residents हैं, they have searched health issues online. Just imagine, which means people are pretty proactive in learning about health related issues, which in turn may make doctors life easier. Obviously, I mean, आप खुद ही जाके information ले लें online और doctors को तंग ना करें, और doctors
only go there when you need something seriously, when you're seriously ill. So it seems that way, right? But what happened is, or what is happening even still, I think we all are experiencing information overload. Like any other information on internet is overloading people, health information is also overloading people. So hundreds of thousands of websites are there to provide information, which I believe too much. When you just put reasons for headache, reasons for hair fall, reasons for skin problems, hundreds and thousands of pages will be displayed. Internet is a source of information overload, which can be confusing, especially when it is related to health issues. And how does that create a problem? Obviously, you read something online, multiple type of information, you get confused. Then what happens? You go to your doctor, and it leads to lengthier discussions, and it makes the doctor as well as patients frustrated, because doctor doesn't have time to answer all those kind of questions. And due to which, what happens, sometimes there is a sense of distrust that develops between the patient and the doctor. People sometimes believe that the doctor either does not want to tell them the real thing, or he or she doesn't know it. So that they're kind of confused. They're like, he's not telling the true story. Whereas it's not like that, because the patient has gotten so much information from different sources without realizing if that information is even correct or not. That is the key. Now, and this is what we were coming to, the credibility part. जब मैंने कहा कि ये information सही है भी कि नहीं, तो credibility एक बड़ा major issue आता है. Now, credibility of online information has always been an issue, and obviously it's more of a problem if it's about health, because health is the real wealth, as people say. Studies have found that many people trust the online sources without looking at their authenticity. I mean, come on, how many times have you actually checked the background of a website? What you do is you just put something in your search engine and pick up whatever comes first, right? So you always believe that whatever comes first is the correct thing. Now, people have a tendency actually to believe in something that they think is right, which usually they don't hear it from their physicians. So you have something in your mind, and you're searching for answers, and the answers which are somewhat related to what is in your mind is actually you pick up and believe in. So what the research has told, that 34 physicians actually evaluated the quality of online health information websites. In America, they did a study of 34 doctors. What they found was 75% of the first few search pages, when they put something in Google, and they press the search button, 75% of the time what happened, that those search pages did not actually point to the exact relevant information, or authentic pages. And in that case, people were just picking the first 2-3 pages. And 45% of the clinical information in English, and then 22% Spanish were minimally correct. यानी 45% was minimally correct. का मतलब क्या है? 55% information जो है वो totally गलत थी. यानी that is the situation online. This is what doctors are saying. So, as we said, that credibility, authenticity is very important. So you need to understand where to look for information. As we know that many people look online for symptoms, because it's too much of an effort and money and all that, going to a doctor and finding out about your information. So it's better that go online and find out what it is. If you want to do that, and I think you should do that, if you can, but it's better to identify the sources. So these are some of the sources that I have outlined, like government sources, National Health Service, government of UK, similarly National Health Service, government of USA. There are a lot of information which is relatively credible information. So if you're going for health information, always choose authentic information which is supported by the government. And yes, before we leave this online websites,
do watch this video. This is a very interesting video. It's called Dr. Google, and it's basically made and sung by doctors who are actually telling you not to consult Dr. Google, and go to real doctors. So just click on it and watch it. It's very interesting. Now, अभी तक हमने बात की ऑनलाइन हेल्थ वेबसाइट्स की, जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, ठीक है, और वो डाल देती हैं जिसपे आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है. Now we talk about communities, health communities. Now these are social media groups which are created to connect people regarding any specific or not specific, any different health conditions. Now, unlike standard websites, which share health information, these are user forums that are created by people to share their or anybody else's experience of certain medical conditions. For example, somebody has a heart surgery, so he or she had a very good experience. So what they do, what she does or he does, कि वो एक website बना लेते हैं, एक forum बना, उस पे अपना सारा experience डाल देते हैं. So people who have been through that, they start chipping in, they start putting in, okay, कैसा experience था किसी डॉक्टर के साथ, किसी हॉस्पिटल के साथ, किसी प्रोसीजर के साथ. इस तरीके से ये forums ग्रो करते हैं. अब इसमें दो तरीके से ये forums होते हैं. Two ways to get access to health experience of others, when you want to get experience of the community, knowledge of the community. एक तो ये कि participate in health social network of forums, so virtual community of individuals interested in a specific disease or health condition. तो एक ग्रुप जो है, somebody creates that, और एक वेबसाइट बना लेता है और उस पे इनिशिएट करता है कि okay, we are going to start this group, now you can start connecting and adding your experience in different areas. One such example is that patientslikeme.com, very interesting thing, you can check it out. दूसरा तरीका क्या है, ब्रॉडकास्ट अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प ऑन द इंटरनेट टू पीपल विद यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स. इसको हम कॉमनली कहते हैं क्राउड सोर्सिंग अ प्रॉब्लम, और ये क्राउड में जो है, ये इसकी एक एग्जांपल है. यानी जैसे मैंने कहा, if you have a problem, and you are unable to find a solution, so you create a forum. बहुत से forum website से चले जाओ, Facebook में भी है और भी जगहों पे है, and you create a tag, I have this problem and I have tried this, I have taken this procedure, I've done this medicine, blah blah blah, whatever, and see how people react. People are going to give you advice about that, and this is how these forums populate information. Okay, pros and cons. Now, such health communities have helped people cope up with their specific conditions. For example, a survey of 147 HIV positive persons found that health internet use was associated with better knowledge, better coping, and greater social support among patients. Why? Because a major role of online health communities is to provide social support to people suffering from some chronic diseases and share experiences that help them and may help others. Now, you see, the point here is this social support. Online health communities are not doctors' communities. They are not professionals sitting there. They're people who have experienced something. होता क्या है ज़्यादातर, when you're worried about something, you know, if you want to go for something, should you do it, or you have done it and it didn't go well, you need some support. ये कम्युनिटीज का ज्यादा रोल जो है वो सपोर्ट में है, ठीक है. बहुत से लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और उसके बाद क्या हुआ, दे गॉट बेटर, अच्छा हुआ, ऑलराइट, वेरी गुड. सो थोड़ा सा ये है कि इट गिव्स यू that hope, that things will be fine, especially when something happens. Most of the time bad happens, then you quickly resort to some kind of situation, यार कुछ करना चाहिए, ठीक है. You need that support. तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि online health communities are very important, and their role in socially supporting people is very important. But remember one thing, these are personal experiences shared. हमने कहा कि लोग सपोर्ट करते हैं, but this could be bad. You rather are asking for some support, but there are people who didn't have a good experience, and that can basically make you anxious, that can make you more worried. तो ये भी हो सकता है. और क्योंकि ओपन फोरम है, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. And also, if there are people helping others to avoid using drugs, there are those who will be sharing how drugs help them. One has no control over what one shares. Yeah, I mean, you're looking for कि भाई smoking है, ठीक है ना, I want to quit smoking.
bad habit and I need some support. Yeah, many people are saying do this, do that, this helps, that helps. But somebody comes and says, you know what, smoking helps me. तो वही बात है कि we have to be careful, you know, what kind of advice is out there. So you need to take a look at that. Okay. Next topic हमारा आता है electronic medical record. Now, if you have experienced hospital, I hope कि not personally, but कभी गए होगे, visit किया होगा, कोई बीमार हो, तो अस्पताल में जब किसी मरीज को आप देखने जाते हैं तो स्पेशली जब वो बेड पे होता है तो आप देखेंगे उसके साथ, मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, सरकारी अस्पतालों की मिसाल दे रहा हूँ, होता क्या है कि बेड के साथ जो है एक टेबल पड़ी होगी जिसके ऊपर जो है एक फाइल पड़ी होगी जो कि उस मरीज की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब वो उसको दाखिल कर लेते हैं तो उसके ऊपर उसकी बेसिक डाटा वगैरह डाल के और उसकी ट्रीटमेंट सो कॉल जो है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो आप कभी भी नोट करें जब डॉक्टर्स विजिट पे आते हैं तो वो फाइल चेक करते हैं और उसमें एंट्रीज करते हैं, अच्छा जी क्या है, हाउ वाज द टेम्परेचर, यू नो, क्या क्या ट्रीटमेंट हो गया वगैरह वगैरह। दिस इज द मैनुअल सिस्टम दैट वी हैव। इसको बेसिकली दिस इज अ मेडिकल रिकॉर्ड, यू नो, ये बंदे का मेडिकल रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या ईएमआर, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड, यू नो, कंप्यूटर पे। तो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वही मेडिकल रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं a digital version of paper record in a doctor's practice or in a hospital is called an EMR. It contains information of patients' medical conditions, their interaction with people, places, processes, materials, you know, medication क्या लिया, कैसे किया, क्या मसला था, गिर गया था, whatever happened, you know, within a hospital. ये सारी information उस एक clinic या उस एक hospital के अंदर है, and that is important to understand. The idea of this EMR was actually conceived by Dr. Lawrence Weed in a research paper that he published back in 64. अभी देखो personal computers common नहीं हुए थे, but computers were becoming, you know, ubiquitous in industry at that time at least. So he came up with the term जिसको उसने कहा POMR, you know, problem oriented medical record. This is what he called, and he basically was the first one to present this idea back in 64. अच्छा, दूसरी एक चीज के साथ रिलेटेड है एंड इधर ही हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स. नाउ how is it different from EMR? Basically, personal health record is kind of an EMR. It is EMR, but it has something else. Plus that it is a complete medical history of a patient that can be shared with doctors in different hospitals. That is the key. ऊपर देखिए मैंने कहा था inside a hospital, तो ईएमआर जो है हर अस्पताल, हर क्लिनिक, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन का एक पर्सनल वो होता है, वहीं पे वो इंफॉर्मेशन होती है, वहीं पे मौजूद होती है। लेकिन पर्सनल हिस्ट्री जो है, सॉरी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो पेशेंट का होता है और वो अक्रॉस हॉस्पिटल्स शेयर हो सकता है। ये की डिफरेंस है जो हमने जहन में रखना है। ईएमआर इज ओल्ड, 1964 में ही कंसीव द आइडिया, ठीक है, पीओएमआर के जरिए उसने कंसीव किया। पीएचआर जो है ये जो इंटर हॉस्पिटल या इंटर इंस्टीट्यूशंस लिंकेजेस हैं या शेयरिंग है, दिस इज न्यू। सो पीएचआर इज अ रादर न्यू कॉन्सेप्ट। नाउ पीओएमआर के मेजर कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है? डाटाबेस है, इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, या कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया, एज एटसेट्रा। कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट, यू नो, उसके बाद इनिशियल प्लान्स फॉर ईच प्रॉब्लम, यू नो, कि सब्जेक्टिव क्या सिम्टम्स है, कंप्लेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उसके एग्जाम्स हुए हैं, उसको देखा गया, हाँ जी कहीं इफ ही फेल डाउन सो इज देयर अ ब्रूज, इज देयर अ ब्रोकन, यू नो, बोन और समथिंग। लैब टेस्ट क्या बता रहे हैं, सिमिलरली प्लान्स किए जाते हैं कि based on these observations, subjective, objective, they are planned, actions are planned, and finally daily progress notes based on the number 3. So this is basically POMR, and in fact this was the idea which Dr. Weed gave earlier. So modern EMR जो hospitals ने adopt किया है वो basically इसी के ऊपर base करता है, ठीक है। Okay, as I said, PHR, EMR, you know, difference है, लेकिन इसके बाद जो हमारी discussion है वो basically one and the same होगी. If I'm using the term EMR, just take it in both ways that we are discussing both together, you know. फायदा क्या है? Well, these are typical
बेनिफिट्स जो कि हमें हर जगह पे नजर आते हैं, जो कंप्यूटराइजेशन के फायदे होते हैं: फास्ट, एक्यूरेट, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, medical errors are reduced and healthcare is improved. Great, this is the main objective. Patient charts are more complete and clearer, no more deciphering, bad handwritings. पेपर के ऊपर डॉक्टर आता है, जिस तरह की राइटिंग है दूसरा पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, but these problems are solved. Information sharing can reduce duplicate testing, which saves time, money, a lot of trouble. Okay. Improved information access makes prescribing medication safer and more reliable. Okay. More complete information means more accurate diagnosis. So you see, everything is great. ऐसा है कि जब कंप्यूटराइजेशन हो गई, EMRs हो गए, PHRs बन गए, तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए. Well, actually होता नहीं है. In real world, never does it happen that computerization brings, sometimes, बल्कि most of the times computerization brings more problems. Well, that's how it is. अच्छा, एडॉप्शन 64 में ही आइडेंटिफाइड कि भाई PMR होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए. तो उसका मतलब है कि फौरन हो जाता. जूनी कंप्यूटर्स कॉमन हुए 80s में, तो बन जाना चाहिए था, बट इट डिडंट हैपन लाइक दैट. Progress on the adoption of EMR in hospitals and health practices has been very slow, compared to the availability of technology. 2008 में, अब दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, जो बाद में आप देखेंगे ना तो उसको कंपेयर करो. 2008 में only 10% of hospitals estimated in America and the US had a full-fledged EMR system. In the US, only 10% of hospitals. In 2011, for example, New York में सिर्फ 15% hospitals में EMR implemented है. Private hospitals obviously were quicker in adopting EMRs than public ones. Why is that? That will be a question for you guys. अच्छा, अमेरिका की बात की. यूरोप में adoption rate is higher in richer countries like Austria, Germany, Ireland, France, compared to the poorer countries like Hungary and Bulgaria. And you'll be surprised that currently 40 to 50% on average अगर देखा जाए तो EMR जो है यूरोपियन कंट्रीज में इम्प्लीमेंटेड है. मतलब 100% वहां पे भी नहीं है. ना डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 2008 में हमने कहा कि अमेरिका में तकरीबन 10% अस्पताल में EMR था. Currently, it's estimated that over 90% of hospitals in US have some kind of EMR PHR. And why is that? Because in 2008, Obama became the president. उसने क्या किया? उसने $36 billion inject किए, just for hospitals to get EMRs. जिसकी वजह से 10 साल में आज की बात करें 2018-19 का जो डाटा है वो ये बता रहा, ऑलमोस्ट 90% के पास सम काइंड ऑफ EMR है. 10 years में 10% से 90% पे है. ग्रेट, राइट? शुड बी ग्रेट. ओके, प्रोग्रेशन क्यों स्लो रहा है? जैसे हमने कहा कि भाई 2008 में तो टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त थी, एवरीथिंग वाज देयर, बट स्टिल बड़े लोग नहीं थे. लेकिन 10 सालों में वो बढ़ गए, और हमें पता है कि क्यों बढ़ गए. So automation and computerization is and has always been a challenging task for many industries and people to adopt. Health sector is no exception. याद रखना चाहिए. Interesting. A systematic review of 1,700 research papers and articles on EMRs found 8 barriers to acceptance. ठीक है, ये 8 barriers उन्होंने कहा, जिसमें financial है, technical है, social and psychological है, time, legal, organizational and change. This is a research thing. So उन्होंने कहा जी ये 8 ऐसे बैरियर्स हैं, ऐसे मसले हैं जो कि हिंड्रेंस यानी रुकावट बना रहे हैं EMRs को अडॉप्ट करने के लिए. फाइनेंशियल भी नो, अभी हमने पीछे मिसाल दी. $36 billion वो देता है, तो 10% से तमाम जारी बात है, पैसे आ रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट व्हेन यू डोंट हैव मनी, ऑब्वियसली यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट. दूसरी चीज टेक्निकल है, टेक्निकल नॉलेज ऑफ द फिजिशियंस. यस, डॉक्टर्स, आई मीन डॉक्टर्स आर गुड एट मेडिकल स्टफ, बट हमने ये रियलाइज नहीं किया कि वो कंप्यूटर्स के साथ कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं. दैट इज स्टिल
एंड मोस्ट स्पेशली जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए अभी भी ये चीज जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. फिर टाइम का इशू आता है. बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर EMR इंस्टॉलेशन इज अ न्यू थिंग. कितना टाइम जो है आप लगा रहे हैं, ट्रेनिंग्स पे लगा रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है. ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है. Social psychological factors including interpersonal relationships among stakeholders. If I am the IT guy, if I am the technical company जो कर रही है, तो वो तो बड़ी excited होगी. They want to do it, they are doing everything because we are being paid for it. But then the people at the receiving end, the doctors, the nurses, the administration, how are they taking it? Are they happy? Are they also excited? तो ये बड़े psychological issues आते हैं, social issues आते हैं. और फिर organizational and change process, because things will change, the processes will change, and these include leadership और organization structure. तो leadership का role जो है वो बड़ा important होता है. ये तमाम चीजें जो कि हमारे लिए जो reality है, तो सिर्फ ये नहीं है कि जी आपके पास पैसे आ गए, आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया और सब कुछ ठीक हो गया. नहीं, ये तमाम चीजें जो है ना, ये अपना रोल प्ले करती हैं. And further research found the importance of the role of leadership and environment of collaboration and teamwork, which is natural. जिस एनवायरनमेंट में collaboration, teamwork है और leadership बहुत supportive है, तो ये problems नहीं आते. ओके, हमने कहा adoption. अब हमने बात की कि 90% अस्पतालों में अमेरिका में हो गए, उन्होंने डाल दिया, ठीक है, but still there are problems. ऐसा नहीं है कि they have implemented and everything is smooth. No, nothing is ever smooth. So around the world, countries have adopted and implemented these EMR systems, but they have their own share of problems. And why? Because always remember that every field of life has challenges in terms of computerization for a variety of reasons. कोई area ऐसा नहीं है कि जिसमें computerization जो बड़ी smooth हो. It always has problems. Reasons. Uh, Compatibility issues between EMR systems supported by different vendors, obviously, difference in terms of software, data variables, hardware, etc. एक कंपनी है, वो एक हॉस्पिटल के लिए बनाती है एक सॉफ्टवेयर, EMR सॉफ्टवेयर बनाती है, वो अपने तरीके से बनाती है, उस हॉस्पिटल की नीड्स के मुताबिक बनाती है. इट डिपेंड्स हाउ मच मनी दे हैव, तो जाहिर बात है. अब जैसे मैंने कहा, एक हॉस्पिटल बहुत हाई टेक है, वो तमाम डाटा जो है वो बार कोड्स भी यूज कर रहे हैं, वो स्कैनर्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं कर सकता, तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट चीजें दे रही है, जो कि फिर कंपैटिबिलिटी इशू में आती है. जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है और मेरा ख्याल है कि की प्रॉब्लम है, वो सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है. फॉर एग्जांपल, September 2009 to December 2012, almost 3 years period, में more than 18 million Americans were affected by medical record data breaches. Just imagine. 2016 में 90 million Americans were affected by security breaches. So this is a serious problem. People have trust issues, to be very honest. I mean, if you look at it, they have serious trust issues. So इसके बाद data inaccuracies in medical records, another serious problem. Many times patients complain of errors in their medical records, wrong disease or wrong prescription there. An American Institute report says that between 44,000 and 98,000 people die every year due to medical errors. Imagine. और हमने शुरू में बात की थी, अगर आपको याद हो, कि इसके benefits क्या हैं. Benefits में हमने ऊपर क्या किया था कि भाई, with fast, accurate, updated information, medical errors are reduced. तो ये तो बेहतर होना चाहिए, but unfortunately, this is not the situation. Similarly, lack of interest on the doctor's part. पहले भी हमने बात की कि डॉक्टर्स का इंटरेस्ट कितना है. Are they willing to adopt the new system? क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट इज जस्ट मैनेजमेंट थिंग, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. और दूसरा, चंद एक ने ये भी इवन कंप्लेन की कि हमारी कॉस्ट जो है, ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है. Finally, data ownership भी है. Who owns the data? Doctor, hospital, patient. These are questions जो कि linger on करते हैं. Now, finally, before we leave this topic, EMR या medical record systems जो हैं, these are socio-technical systems. Okay, what should it be? अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे देखें.
all the stakeholders like patients, families, doctors, nurses, everybody must be involved in the adoption, execution, and evolving processes of EMR and PHR. That is a must. When you're developing a system, everybody should be on board. It should not be just the administration, it should not just be the doctors, it should not just be the management. Everybody should be on board. दूसरी बात, every person shall have his or her medical data right from the birth on a portable device. जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसकी तमाम मेडिकल इंफॉर्मेशन किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, जो कि बाद में अपडेट भी होती रहे. ठीक है, अपडेट एट ईच इंटरेक्शन विद द मेडिकल सिस्टम. लाइक कोई नई डिजीज हो गई, कोई नया मसला हो गया, तो वो अपडेट होनी चाहिए. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए जो मरीज है, जो पर्सन है. ठीक है. Similarly, all the data shall be interoperable with the EMRs at hospitals, private clinics, pharmacies, laboratories. मतलब एक complete network होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए. यू हैव योर डाटा, आपने एक जगह से काम किया, दूसरे हॉस्पिटल चले गए, दूसरे शहर चले गए, और इजीली दे शुड पिक अप योर डाटा एंड प्रोसेस इट. And the system shall be able to generate concise reports separately meant for patients and doctors. सारी बात है, the kind of report you need is different than doctor. He needs a technical report, you need a general report. So this is what we are talking about. Now, this is what is called an ideal online medical health system. So if you're talking about bragging about a system, this is what we are talking about. Okay, ये सारे characteristics होने चाहिए, इसीलिए मैं इसको ideal online medical system कह रहा हूँ. लेकिन despite 5 decades, 5 decades, बल्कि 5 से ज्यादा हो गए अब तो, यानी 64 में ईएमआर का आइडिया या पीओएमआर का आइडिया दिया गया था, एंड वी आर स्टिल फॉर अवे फ्रॉम अचीविंग दिस विजन. इमेजिन in western countries, in developed countries, they do not have 100%, they have less than that, and then the problems that I mentioned, you can imagine. So it's not a simple thing. Next comes medical data processing. Now what is this? अच्छा, आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं ना, तो आप देखें कि जब उसको खोलें तो उसके अंदर मेडिसिन होती है और साथ एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें बहुत सी डिटेल्स होती हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते भी नहीं है. बट समटाइम्स यू लुक एट सर्टेन थिंग्स, एंड व्हाट आर दोस? साइड इफेक्ट्स. ये साइड इफेक्ट्स बंदे जरूर देखते हैं कि यार इस दवाई के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम इज क्वाइट यूजफुल. ठीक है ना. This relates to adverse drug reactions, ADEs. यही जो साइड इफेक्ट्स की मैंने बात की कि यार इसके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं. बाज रिएक्शंस कॉमन होते हैं, बाज रिएक्शंस किसी बंदे की कंडीशन से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. और ड्रग ड्रग रिएक्शंस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. दो डिफरेंट दवाइयां हैं, अगर एक मरीज ले रहा है तो उनका आपस में रिएक्शन हो सकता है. तो जाहिर बात है ऑन पेपर इन चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है. तो इसलिए कहा जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो इस तरह की इश्यूज को जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है. एंड व्हाट वी सॉ, a study of 37,000 patients admitted to hospitals over 18 months. ठीक है जी. They showed that 730 ADEs were detected, yani adverse drug reactions were detected, compared to traditional systems where none were detected. 37,000 में कम से कम 730 केसेस ऐसे थे जो कि ऐसे रिएक्शंस कर सकते थे, मगर वो सिस्टम ने डिटेक्ट किया. Various studies in the US showed that alerts were generated by the automated system to prevent ADEs, and 44% of them were not recognized by physicians before the like. यानी 44% केसेस ऐसे हैं कि जो खाली पेपर के ऊपर डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि दवाइयों की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल दी गई, तो आपने अगर दवाई ए और बी किसी को प्रिस्क्राइब की है और उनके दरमियान कोई ड्रग ड्रग रिएक्शन का इशू है, तो वो अलर्ट इशू कर देता है, डॉक्टर को पता लगता है ऑल राइट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. So far so good, it's a good thing. But as we said before, still the system is far from perfect, and because we don't have any perfect universal personal healthcare system which is operable across multiple platforms. So जब तक कोई ऐसा environment नहीं आता, problems रहेंगे हमारे पास. Now the next topic, and it's again a very interesting and important topic, big data.
एंड डिजीज सर्वेलेंस. नाउ डिजीज सर्वेलेंस की बात करते हैं और आजकल हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, वी कैन यू कैन अंडरस्टैंड, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड. So we start with epidemiology. What is epidemiology? It's the study of scientific, systematic, and data-driven. Uh, it is the study of the distribution and determinants of health-related states and events in specified populations. ठीक है? Epidemiology, simple अल्फाज में हम क्या कहेंगे कि बेसिकली किसी भी बीमारी को, डिजीज को स्टडी करना, कहाँ से जनरेट हुई है, क्या उसका फैलाव है, किस तरीके से वो फैलती है और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो सिंपल अल्फाज में ये एक फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस है. Now, disease surveillance is an established field in medical science, traditionally conducted by medical institutions. For example, पाकिस्तान में पोलियो unfortunately is still there. तो ये एक ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको फॉलो करते आए हैं और हम इसको, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं which are always tracking these polio cases और वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन दे ट्राई टू इरेडिकेट. और इसलिए हमारे पास ये सारी स्कीम्स चलती हैं. इस तरह और भी मलेरिया आ जाता है, अभी डेंगू अनफॉर्चुनेटली एक और प्रॉब्लम है. तो इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जहां भी होते हैं वो उनको सर्वेल करते हैं. ओके, सर्वेलेंस. नाउ Dr. Gunther Eisenbach, now he's a Canadian researcher who came up with the term for digital disease surveillance. अभी हमने बात की थी एपिडेमियोलॉजी की, डिजीज सर्वेलेंस. ये कहता है जी, इसने एक वर्ड यूज किया है infodemiology, which in his words is science of distribution and determinants of information in an electronic medium. अब इसको अगर आप कंपेयर करें इस डेफिनेशन के साथ, तो यू कैन सी कि यू नो इट्स द सेम. सिर्फ ऐड क्या हो रहा है, electronic medium ऐड हो रहा है. electronic medium, specifically the internet, or in a population with the ultimate aim to inform public health and public policy. So it is disease surveillance, but at global level using the internet. ठीक है, हम किसी सिंगल लोकेशन की बात नहीं कर रहे. ठीक है, हम डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात करें और हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन की बात करें, जिसको ये इन्फोडेमियोलॉजी का नाम देता है. नाउ it's a new science that focuses on scanning the internet for user contributed health related content with the goal of improving public health. ठीक है, इंटरनेट इसका सोर्स है क्योंकि उसमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, वहीं से वो डाटा, इसलिए हम इसको बिग डाटा बोल रहे हैं. रिमेंबर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डाटाबेस, इट्स नॉट अ हॉस्पिटल्स डाटाबेस, इट्स नॉट even a country's database. It's the world database जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा है. इसलिए यहाँ पे बिग डाटा का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. It provides data rapidly, low cost, with specific information about locations of the outbreak. Infodemiology is used to study the spread of various diseases and disasters. Okay, disasters भी है, मतलब इसमें सिर्फ diseases नहीं है, इसमें disasters like earthquake happens, कोई storm आ जाता है, ठीक है, उसको भी basically track करते हैं. It's the same kind of thing. Now, disease की हमने बात की, Ebola, H1N5, SARS, Zika, and well, the latest and worst villain, coronavirus. Now, you see this information. आप अखबार उठाते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, कौन से मुल्क में क्या सिचुएशन है, हाउ मेनी पेशेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, हाउ मेनी आर क्योर्ड, हाउ मेनी अनफॉर्चुनेटली डाइड. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इन्फोडेमियोलॉजी के कवर में आती है. एंड हाउ आर यू गेटिंग, नोबडी इज जस्ट गिविंग यू द पेपर, यू नो, इट्स बेसिकली स्कैनिंग. ये जो बिग डाटा सिस्टम्स हैं हमारे पास, ये स्कैन करके ये सारा डाटा उठा रहे हैं. तो वट एवर इज अवेलेबल ऑनलाइन, द डाटा इज स्कैन एंड देन मेड अवेलेबल. सो दिस इज exactly what infodemiology is doing, and you actually are first hand witnessing it in this particular case of coronavirus. Next topic is medical simulators. Now, वर्ड सिमुलेटर्स जो है वो तो जाहिर बात है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है. हम सिमुलेशन करते हैं, हम सिमुलेटर्स यूज करते हैं, जाहिर बात है किस सिचुएशन में, जब हमारे पास कोई रियल
सिचुएशन होती है उसको हम वर्चुअली सिमुलेट करते हैं। कंप्यूटर साइंस में बड़ा कॉमन है, आपने नाम सुना होगा एयरप्लेन सिमुलेटर्स का। जाहिर बात है, यू कैन नॉट गिव समबडी द की टू एरोप्लेन कि जाओ भाई टेक इट एंड ट्राई टू लर्न इट। नो, सिमुलेटर्स हेल्प देम। इस तरह मेडिकल साइंस में भी हमारे पास सिमुलेटर्स हैं। देखिए, बहुत सिचुएशंस होती है व्हेन यू आर टीचिंग, व्हेन दीस मेडिकल स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। जैसे आप घरों में देखते हैं, ब्लड प्रेशर लेना, ब्लड शुगर जो है वो चेक करना, या किसी को इंजेक्शन लगाना, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड टेस्ट ऑन पीपल, यू नो, दे आर नॉट that harmful, but most of the procedures are very high risk, cannot be performed on normal human beings. You cannot say, okay, you know, I have a class to understand how the heart works, let me open your heart and see. No, you can't do that. Inserting a stent, रिमूविंग अ ट्यूमर, यू नो, तो ये बड़ी सीरियस किस्म की चीजें हैं। जाहिर बात है, डॉक्टर्स को सिखाना पड़ता है। पहले ज़माने में बहुत मुश्किल था, दे डिडंट हैव टेक्नोलॉजी, सो डमीज बना दिए जाते थे, या इवन डेड बॉडीज को, अभी भी डेड बॉडीज यूज होती हैं लेकिन पहले ज्यादा इन्हिसार था। अभी जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमने सिमुलेटर्स बना लिए। Medical simulators help students learn complex procedures without endangering anyone's life. These could be real life mannequins, you know, electromechanical bodies होती हैं जिनके अंदर सारे parts उन्होंने बनाए होते हैं, and you can just test things on them. और virtual reality based models भी हो सकते हैं. They've been proven quite successful in training teamwork, especially in a crisis situation. तो इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि भाई एक real situation बना दिया जाता है. There is a patient coming in, an accident patient who has trauma, who has, you know, broken bones or something. अब उसको कैसे ट्रीट करना है, तो एक सिचुएशन बनाई जाती है जहाँ नर्सेस भी हैं, इमरजेंसी डॉक्टर्स भी हैं, और उसमें बड़ा ये सक्सेसफुल देखा गया ये सिस्टम जो है। इसके बाद आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ प्रोस्थेसिस बॉडी पार्ट्स, यू नो, which were developed for people who have disability. बहुत पुरानी चीज है, आपने वुडन लेग्स देखी होंगी, आर्म्स देखी होंगी, स्पेशली जो जंगों में प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, बॉडी पार्ट जो है वो यू नो किसी वजह से दे लूज देम, तो ये प्रोस्थेटिक लिम्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी सी, okay, yeah, so prosthetic limbs, for example, you would have seen that hand, this is an arm, you know, जो कि मैकेनिकल आर्म बनाई हुई है। इसी तरह this is a mechanical leg, for example. This is what we are talking about. Nowadays they are developing intelligent you know, these devices using 3D printing, for example. 3D printers are very useful thing, you know, they are helping all fields in creating things which were very difficult before. So for example, this is what you know, this has created, for example, एक artificial leg जो है वो create हुई है. This is, for example, you can see artificial hands, and they are all created by 3D printing. The intelligent prosthetic limb is equipped with sensors which send electrical signals to the brain and learn how to send signals to activate and control motors to move the artificial limb. Everything is connected, you know, with the brain. जाहिर बात है, brain is always signaling. Now, पुराने जो prosthetics थे वो क्या थे? They were just, you know, these wooden things. You would put them on, they would not do anything, you could not move anything, but just there, you know. अभी जो है, ये जो इंटेलिजेंट प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, इसका क्या होता है कि इसमें बेसिकली सेंसर्स होते हैं, और जिस तरह आप हाथ मूव करते हैं, अपनी फिंगर्स मूव करते हैं, उसी तरीके से ये सेंसर्स जो हैं ये डिटेक्ट करते हैं सिग्नल्स को, एंड देन they make that artificial limb, whether it's hand or arm or foot or leg, actually move. And recent advances in brain computer interfaces, you know, BCI, has yielded an artificial hand which allows the owner to feel various sensations when the hand touches different surfaces. So it's not only that you can move your fingers, but also you can feel if it's wood, if it's a glass, if I'm holding something, I actually get that feeling in just a real hand karega. So that's pretty amazing, you know. Artificial implants की बात करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल पेसमेकर, नाम बहुत पुराना है. स्मॉल इम्प्लांट्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द हार्ट. Pacemaker computer senses the electrical signals of the heart and sends back electrical signals to correct the abnormal heart rhythms. It was initially used in 1958. अच्छा, ये हार्ट नहीं है, ये हार्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये बेसिकली उसको स्ट्रेंथन कर रहा है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्मॉल डिवाइस, इट्स हार्डली, आई डोंट नो, 3-4 centimeters है. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, दिस इज where it is implanted, in a human's body. You can see a very on the left side, छोटी सी चीज है. और ये इसका पिक्चर है कि हार्ट के पास जो है ये पेसमेकर लगा दिया जाता है और इसको सारे इसके केबल्स हैं जो इसमें जाके कनेक्टेड हैं. So this is, you see, procedure was done back in 1958, quite an old thing. Cochlear implants are used to improve hearing, varieties of which have been surgically inserted since 60s. Cochlear implants, they look like this. They कान के ऊपर लगा दिया जाता है और यहाँ से एक्सेसिबल होता है, बच्चों को भी लगाया जाता है और ये काफी हद तक इनको सपोर्ट करता है. अगेन, इट्स एन ओल्ड टेक्नोलॉजी. What is new is basically these retina implants, artificial retina implants. अभी ये totally नई चीज है. They are still in experimental phase. It's a recent development to help visually impaired people, which will improve over time with increasing number of pixels. And just imagine, for example, the size of it. It's a small chip जो कि cornea के पीछे लगा दिया जाता है, and it will send the signals to the brain whenever light falls onto it. तो होपफुली we hope कि ये चीज बन जाए, and I think it's going to help a lot of people, who lose eyesight because of many reasons. इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की बात होती है. हमने पहले बात की पेसमेकर जो है हार्ट को सपोर्ट करता है. आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाया जा चुका है. ठीक है. इट्स नॉट लाइक पेसमेकर, इट बेसिकली रिप्लेसेस अ हार्ट. और सबसे पहले जो है वो 50s में एक हार्ट बनाया गया था, बहुत पुराना है. ठीक है ना. बट नाउ दे हैव सॉफ्ट टिश्यू हार्ट्स जो उन्होंने बनाया और उसको बाकायदा रिप्लेस कर सकते हैं. इसी तरह आर्टिफिशियल किडनीज और पेनक्रियास भी बनाए जा रहे हैं. लेकिन द थिंग इज कि इट्स नॉट स्टिल दैट इजी, बिकॉज ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है that is still the biggest hurdle. Because when you put in आपने देखा होगा, for example, kidney implant है या किडनी डोनर्स जो होते हैं, these are very specific and serious operations, and they're not very simple. किसी का किडनी जब डोनेट किया जाता है तो उसको उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, अदरवाइज वो बॉडी रिजेक्ट कर देगी. एनी फॉरेन बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, वो बॉडी रिजेक्ट करती है. तो इसलिए ये इश्यूज जो हैं ये भी हैं, साइंस लगी हुई है, बट दे आर स्टिल वर्किंग. Then Incredible Bionic Man, very interesting. It's a robot with complete artificial body parts, a heart, a pancreas, kidney, even synthetic. And I think back in 2000, ये आप नीचे इस पे जो लिंक मैंने दिया हुआ है, you can go and check here. Uh, 2013 में they developed that, and this is how it actually looks. This is like the face looks like a real man, but this is a complete mechanical machine जो कि चलती है, move करती है, and they actually developed it. Interesting. You can check it out. Okay, now comes a very, very interesting and modern kind of topic. Precision medicine या personalized medicine. अभी तक क्या होता है? Normally क्या होता है जी? When you have a disease, okay, I'm not talking about small diseases, I'm talking about big diseases. होता क्या है? Somebody gets diabetes, तो डॉक्टर कहता है अच्छा जी डायबिटीज के लिए ए दवाई जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है, सो यू स्टार्ट विद इट. बट व्हाट हैपेंस अगर आप 3-4 डायबिटीज के पेशेंट्स को देखें तो वो डिफरेंट मेडिकेशंस पे हैं. होता यही कि हर इंसान डिफरेंट है मेडिकल पर्सपेक्टिव से, बट हमारे पास कोई तरीका नहीं है unless and until we try different things. Now, precision medicine, it's a medical model that proposes the customization of healthcare. That's the key. With medical decisions, treatments, practices, or products being tailored to the individual patient instead of one drug fits all model. Now, please do not take individual patient in literal terms. इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदे की बात हो रही है, नहीं. It's basically people who share certain characteristics. तो next उसमें हम बताते हैं is an approach
Precision medicine is an approach to patient care that allows doctors to select treatments based on genetics, environment, and lifestyle of group of people. So it's not like, a tablet hai, it's a Panadol and it solves all the problems. No, it's not like that. It's like genetics चेक किए जाते हैं, आपके जीन्स क्या है, आपकी environment क्या है, आपका lifestyle क्या, and accordingly एक ट्रीटमेंट दिया जाता है. इसको हम बेसिकली कस्टमाइज ट्रीटमेंट कहते हैं. दिस इज व्हाट precision medicine is talking about. Now, the hope of precision medicine is that treatments will one day be tailored to the genetic changes in each person's cancer, for example. अब कैंसर की बात होती है, ठीक है. Scientists see a future when genetic tests will help decide which treatments a patient's tumor is most likely to respond to, sparing the patient from receiving treatments that are not likely to help. तो वो अब अगर आप कोई भी कैंसर का पेशेंट है तो देयर इज अ चेकलिस्ट, when a cancer patient goes to the hospital or doctor, तो वो एक चेकलिस्ट है, जी सबसे पहले ये स्टेप है, फिर उसके बाद ये स्टेप है, फिर उसके बाद ये स्टेप है. समथिंग वर्क्स, समथिंग डजंट वर्क. तो यहाँ पे फिर आप पर्सनलाइज तरीके से, इसीलिए पर्सनलाइज मेडिसिन है, आप ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Concerns now. Why would they have concerns? Because it is dealing with one thing, and that is genes. Now, it's an experimental thing, okay? It's not something which is out there and just happening as a regular medicine practice. No, it is still in the experimental phase, but it's expected that this field is going to revolutionize treatments of some of the most difficult diseases like cancers, Alzheimer's, जो हमने कहा था, dementia, या डायबिटिक रेटिनोपैथी. ये डायबिटीज का एक बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है कि उसकी वजह से जो है आईज जो है इफेक्ट होती हैं, साइट इफेक्ट होती है, ठीक है, नर्व्स बेसिकली डैमेज हो जाती हैं. बट द थिंग, द प्रॉब्लम जो मैंने अभी भी बोला, playing with human genes has always been very controversial. When you talk about genetic, the word genetic comes, then it's always controversial, because it's playing with something that is very personal to a human being. So that's why there are some serious social, ethical, and policy related issues related to precision medicine. और इनको इन्होंने जो नाम दिए वो ये कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरा एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज है, डिजाइनर बेबीज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड फाइनली सम रिस्क्स that are involved with it. रिस्क हर चीज में होता है, और जितना ज्यादा नई चीज होगी उसमें उतना रिस्क ज्यादा होगा. Gender discrimination. Now, okay, एक scenario है, when you apply for a job, what happens? You make a CV, आप अपनी CV बनाते हैं, उस पर आप सारी डिटेल डालते हैं, एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, बेसिकली all the good things, because you are going for something. आप कभी उसमें नहीं लिखते how bad you are in something. You obviously have certain bad things, but आप ये लिखते हैं excellent cricket player, but you never write bad football player या bad basketball player. नहीं, you always write the good things. This is your CV. You're looking for a job. Now, science is capable of generating your genetic CV, and let me tell you, genetic CV का जो term है, ये मैंने खुद create किया है. There is no word like just out there. कोई genetic CV का word नहीं होता, मैंने बनाया just to explain. और वो इसलिए it contains your private genetic information, including, besides some other things, the diseases you have or might develop over your course of life. Why did I say that? Because आपको पता है कि फैमिली में जब हम कहते हैं ना कोई बीमारी हो तो वो आगे पास ऑन होती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी की मदर को डायबिटीज है तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि वो बच्चे में भी ट्रांसफर होंगी. या फादर को हार्ट का प्रॉब्लम है या जोड़ों का प्रॉब्लम है, तो वो किसी ना किसी स्टेज पे बच्चों में ट्रांसफर होता है. बट एट द एज ऑफ 20 यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम. 30 में भी नहीं है. बस ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स बड़ी उम्र में आते हैं, बट दे विल कम, So obviously your genes, if your parents have this problem, you know that this problem is going to come. अब genetic discrimination इसको हम क्यों कहते हैं कि it refers to using this private genetic information against you to say deny a job or raise your insurance premium. जैसे मैंने कहा,
आपने तो सीवी में लिखा कि यू आर गुड एट दिस एंड दैट एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपका जेनेटिक्स ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो अप्लाई करता है और उसकी जीन्स में, पेरेंट्स में दो चार बड़ी बड़ी बीमारियां, नाउ द कंपनी इज वॉरिड, यू नो, ओके व्हाट इफ वी टेक हिम, और दो चार साल बाद जो है इस बंदे में प्रॉब्लम्स आ जाएं तो जाहिर बात है हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये बीमार पड़ेगा और ये तमाम प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू डिनाई अ जॉब और रेज योर इंश्योरेंस. तुम्हारी इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको पता लग जाए तो आपका प्रीमियम बढ़ा देगी, बिकॉज यू आर हाई रिस्क पेशेंट, यू नो. सो दैट्स व्हाई ये डिस्क्रिमिनेशन में आ रहा है. इसीलिए they say one might get unfair treatment based on one's genetic information. ठीक है, इसीलिए there are laws in most of the Western countries to avoid such kind of discrimination. So they have these laws that you know you cannot make some information very public. It goes against the person. But it's also true that you know if this information is there and people have access to it, then you can get some help, you know. जैसे मैंने कहा, if your family has diabetes, uh, both parents have diabetes, you definitely will get it, but not at the early age. But if that is there and your genetic and your genes are telling you that you know this is a problem, then that means that hospitals or medical system can intervene and help you before that condition comes and you know make you better. तो थोड़ा बेनिफिट भी हो सकता है. Allocation of resources. Remember one thing, health is an expensive issue all across the world. दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हेल्थ बहुत महंगा है. ठीक है, billions of dollars are spent on medical treatments. Genetic intervention is not cheap. In fact, it is quite expensive compared to many traditional treatments. Yes, genetics की जब बात आएगी तो आम ट्रीटमेंट से हमेशा महंगा होगा. एग्जाम्पल है, I was reading कि genetic testing method to identify patients for a specific treatment, ये cystic fibrosis एक बीमारी है, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रीटमेंट के. उसमें एक जो है वो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करें कि खास मेथड जो है वो यूज करें या ना करें तो उस पर तकरीबन $3 लाख पर ईयर एक्सपेंस आता है, यू नो, फॉर अ नंबर ऑफ पेशेंट्स. और ट्रेडिशनल जो स्कीम्स है उस पर सिर्फ $300 आता है. तो जस्ट इमेजिन द डिफरेंस, यू नो, कि जेनेटिक वो जो है उसके फायदे बहुत हैं लेकिन कॉस्ट भी बहुत है. It's therefore important to allocate dollars and doctors' time appropriately, you know. और एक और interesting चीज कि in America you can get a person's report on genetic markers of you know just 199 US dollars. Sorry, this is markers, okay? MARKERS, not markers. ये टाइपोग्राफिक है. तो आप अपनी रिपोर्ट $200 में ले सकते हैं कि आपके अंदर यू नो कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से चांसेस है बीमारियों की. ये मार्कर्स का मतलब क्या होता है कि आप में फ्यूचर में कैंसर के चांसेस है, अल्जाइमर के चांसेस हैं या और किसी बीमारी के. ठीक है, बट दैट इंफॉर्मेशन इज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. नाउ इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिजाइनर बेबीज. डिजाइनर से क्या मुराद है? डिजाइनर का नाम हम सुनते हैं, डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं, डिजाइनर शूज होते हैं, ठीक है, बैग्स होते हैं. What is the specific thing? Designer is like some specific company involved there, and they're very expensive because they use good quality, they have everything perfect. So वही terminology यहाँ apply करें designer babies. A baby whose genetic makeup has been altered to include a particular gene, for example, you know, certain height, eye color, skin color, or to remove a gene like any disease that he or she might get from his or her parents. Acha, three levels are there, you know, of this designer baby idea. Level one क्या? Prospective parents can get advice about their own genetic marker that might affect their future children, you know. जैसे हमने पहले बात की कि वो $200 वाला आप टेस्ट करवा लें, आप देख लें कि भाई आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये चांसेस हैं, तो आपको पता लगेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव. दिस इज इनिशियल लेवल जो बहुत से लोग कर सकते हैं. लेवल टू क्या बता रहा है? नाउ देयर आर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, यू नो, देयर आर पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग चाइल्ड. They can learn about the genes of their embryo and can abort it if it is not to their expectations. Now, this is something that expecting parents can do. You know, embryo को check करवाएं और उसकी genetics को देखें, क्या उसके genes में ऐसे हैं, कोई ऐसी डाउन सिंड्रोम है, कोई और यू नो एस्पर्गर्स है उसको, आई डोंट नो, और कोई ऐसी बीमारी है तो कैन दे रिमूव इट.
लेवल 3 क्या कहता है? DNA of the fertilized egg can be modified to obtain certain desired characteristics. जैसे मैंने शुरू में कहा था, removing a disease or obtaining a desire. Now this is that science fiction thing, okay? कि आपके जो बच्चा है, उसका जो एम्ब्रियो है, उसमें ऐसे आप बुरी चीजें निकाल दें, अच्छी चीजें डाल दें. अब बुरी चीजें निकालने का क्या मतलब है? अगर आपकी फैमिली में कोई डिजीजेस हैं तो वो खत्म कर दें जी, वो चीजों से निकाल दें. आप उसमें कुछ और डाल दें, उसको हाइट ज्यादा दे दें, उसका कलर अच्छा कर दें, उसको इवन इंटेलिजेंट बच्चा हम बनाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे चीज डाल दें जो बहुत इंटेलिजेंट हो. सो दिस इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी और फिजिकल ट्रेट्स. ये दोनों की बात हो रही है, पर्सनालिटी वाइज भी, फिजिकल वाइज भी. सो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो लेवल्स की बात हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि पहले एक लेवल पे उसके बाद दूसरे पे जाते हैं, नहीं, ये बेसिकली इंटरवेंशन स्टेजेस हैं, ठीक है. तो ये नहीं है कि आप लेवल 1 से 2 पे जाए, 2 से 3 पे. ये बेसिकली ये बता रहा है कि यार इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है. एंड इट इज स्टिल अ ड्रीम बाय द वे, थैंक गॉड, सो डोंट गेट एक्साइटेड. अभी ये चीज रियल नहीं है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, बट इमेजिन, इस पे हम बाद में देखेंगे व्हाट इज योर टेक ऑन इट. And yes, this is more of an ethical question rather than medical question. There are always issues and controversies over level 2 and level 3. हमने पहले बात की level 1 तो ठीक है, मतलब आप अपनी information ले लेते हैं, that's it. Level 2 में you are actually talking about aborting a child, or an embryo, and then changing the genetic markup of an embryo. So issue तो है. On the one hand, it's quite beneficial कि you're avoiding certain diseases. जाहिर बात है, it's a plus thing, अगर फैमिली में कोई ऐसी chronic diseases हैं, वो खत्म हो सकती है, निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से disabilities हम overcome कर सकते हैं. Improving the human race, like people will be born disease free, which means you have a very healthy population, which means you can extend the lifespan. So these are the good parts. But then there are people who are concerned about other issues, inequalities. Zahiri baat hai, designer babies are going to be very expensive. Not everybody can afford that. So those who can afford that will have so-called good babies. Those who cannot afford them, well, I mean, they will be just left out of the system. तो इनइक्वालिटी है. इसी तरह दूसरा जो इशू आ रहा है, वो ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज प्रोडक्ट्स, एज इफ यू आर डिजाइनिंग थिंग्स. जैसे मैं जी अपने घर में फर्नीचर बनाना है, तो मेरी मर्जी का होना चाहिए, तो वी आर डिजाइनिंग as products. So this is another issue जो कि लोगों को bother करता है. और फिर errors and disasters, I mean, nothing goes perfect. You are creating a design a perfect baby, and what if it becomes something else, इस पे मूवीज बनी हैं बहुत सी. तो फ्रैंकनस्टाइन, मैंने कहा जैसे वो फ्रैंकनस्टाइन कोई ऐसा खतरनाक वो चीज बन गई, फिर क्या करेंगे? who's going to be responsible for that? Risks and errors. Okay. Now, any medical procedure is prone to errors and risks. The bigger the procedure, the higher the risk. Similarly, in precision medicine, high risk is involved due to various reasons like diagnostic errors by the doctors or privacy issues or cost of treatments. ये तमाम चीजें हैं जो कि basically add करती हैं towards risk and errors. And ऐसा कि जब हम हायर रिस्क की हायर एरर्स की बात करते हैं, हायर रिस्क की बात करते हैं, हायर फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो तमाम चीजों का स्टेक जो है वो बहुत ज्यादा होता है. तो ये तमाम इश्यूज आते हैं. ये जो मैं नीचे दिए, ये बाद में आपको असाइनमेंट में भी होगा. द क्वेश्चन हियर इज योर व्यूज अबाउट लेवल 2 एंड लेवल 3 इंटरवेंशंस. जो मैंने कहा कंट्रोवर्शियल है, तो वो मैं फिर असाइनमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ब्रेन ट्रेनिंग वेरी क्विकली, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि in order to stay physically fit and active, it is advised to take good diet, a lot of water and regular exercise. Normal है, ठीक है, हम कहते हैं. और आजकल जो हम घरों में बैठे हुए हैं, तो हम कहते हैं जी बेहतर है कि आप ज्यादा पानी पिए, वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें. जाहिर बात है फिट रहने के लिए. The way we can exercise and train to keep our bodies fit, we can also train our brains to keep them fit. इस तरह ब्रेन की एक्सरसाइज भी बड़ी जरूरी है, ठीक है ना. इससे मुराद क्या है? These are basically mental exercises to improve aspects of cognition, like memory, attention, focus, brain speed. इसके लिए एक्सरसाइज होती हैं. तमाम चीजें कि किस तरह मेमोरी को इम्प्रूव किया जाए, अटेंशन को इम्प्रूव किया जाए, स्पीड ब्रेन की जो है.
And computers are basically becoming complementary in brain training exercises. Loads of software out there, just go to your ये क्या होता है आपका गूगल जो है फॉर एग्जांपल, आप उस पर चले जाएं, गूगल प्ले जो है, और जस्ट लिखें ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आपको बहुत से मिल जाएंगी। सुडोको के नाम से मैंने कि वेब सुडोको दिया हुआ है, लुमासिटी है, हंड्रेड्स ऑफ द पजल्स आप सॉल्व करते हैं, तमाम जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली brain exercises, and they are good for you to keep your brain active. Yeah, so lots of exercises are out there, just check them out. Finally, we come to the end and we take a little bit look at robot companions for seniors. Now, you know, better healthcare, modern medicine, people are living longer. मैंने पहले भी शायद एक दफा हमने डिस्कस किया था कि 100 साल पहले एवरेज एजेस अगर आप देख लें तो वो 60 years वेस्टर्न कंट्रीज में थी, आज वो 80 years की रेंज में है। 2015 में देयर वर अराउंड 125 million people who were above 80 years of age. Okay, 2050 में ये नंबर 434 मिलियन हो जाएगा। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल 80 अबव। अभी पाकिस्तान में 80 हमारी एवरेज एज नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 4 गुना बढ़ जाएगा दुनिया में, ठीक है। Which means that you need more people to take care of these elderly people. And why do I say you need more people? Because we are looking at it from a different perspective. Western countries में लोग ज्यादा हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड पीपल होम्स है, ठीक है। हमारे लिए ये बात समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कॉमन। और एक बात मैं आपको बताऊं, वी ऑलवेज से हो कि ओल्ड पीपल होम जो है बड़ी बुरी जगह है, पेरेंट्स को या बुजुर्गों को या ग्रैंड पेरेंट्स को लोग डाल देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते। ट्रस्ट मी, पीपल वांट टू गो देयर देमसेल्व्स बिकॉज young people have no time while older people have all the time. This is a serious problem. घर में रह सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि घर में बच्चों के पास टाइम नहीं है, they're all busy. They need companions, the old people. So जब old people home है, वहां पे उनको सब कुछ मिलता है. Somebody is there to take care of them. There are companions also. Nurses हैं, doctors हैं, caregivers हैं. And also remember, ये जो old people home है, they're not free. ये बड़े expensive होते हैं. You have to pay. There are government ones also, लेकिन when you pay, you get better service. But the key that we are talking about is young people have no time while older people have all the time in the world now. Keep that in mind. ये आपके लिए बड़ा जरूरी है ध्यान में रखना। अच्छा, जाहिर बात है लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। नर्सेज जो है हर वक्त तो आपके साथ बैठ के नहीं वो कर सकती, ठीक है ना, इवन इफ यू आर इन दी ओल्ड पीपल्स होम। सो कंपनीज हैव डन व्हाट, दे आर डेवलपिंग वेरियस नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक डिवाइसेस। नाउ एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? व्हिच डजंट लुक लाइक और प्रिटेंड टू बी ह्यूमन। यानी वो रोबोट नहीं है, वो एआई वाला रोबोट नहीं है जो कि बंदों की हमारी तरह नजर आ रहा है। नो, these are actually machines, और वो नजर भी machines आती हैं, ठीक है, but they act as companions. तो ये एक्चुअल डॉग या कैट या बंदा नहीं होगा कि किसी को धोखा हो सके, नहीं, it is going to be a machine, but it behaves in such a way that it helps you, it you know works with you, it entertains you. ना दो मिसालें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बेसिकली, एंड यू कैन चेक। पारो एक है, एक सील कंपेनियन, और एक ये इसकी वीडियो है, इसको जरूर चेक करें यूट्यूब पे। सिमिलरली एलिक्यू के नाम से एक और डिवाइस है, इसकी भी वीडियो मैंने दी हुई है, इसको भी चेक करें। पारो जो है, सपोज हाउ डज इट लुक, या दिस इज हाउ इट लुक्स, यू कैन सी इट्स अ सील, और इस पे क्वेश्चन हुआ था कि यार व्हाई इज इट नॉट अ डॉग और अ कैट, तो मैंने कहा भाई द थिंग इज इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, and people are very well versed with dogs and cats, so this is something new, you don't expect, उनको पता नहीं है कि कैसे behave करता है, so if there are any problems people will just forget about that. So you see, it's a very cute kind of thing, this is how it looks, mechanical cheese है, and makes sounds and all that, and you see this is what this Paro does. दूसरा जो है एलिक्यू के नाम से है, इट्स एन ऑब्जेक्ट दैट लिसन्स, स्पीक्स एंड गिव्स हेड लाइक जेस्चर्स विद लाइट्स ऑन द टॉप, and a tablet, a tablet computer for providing information and enabling audio visual communications, ठीक है। So
it is not an animal, it is just a device. For example, yeah, this is how it looks like. So you see, this is a device जो कि bubble करता है, इसका head जो है बाकायदा move करता है, you know, ये आप जब वीडियो चलाएंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा, ये साथ टैबलेट है जिसके जरिए इस पे कैमरा भी लगा हुआ और वो इंटरेक्शन कर सकता है. You know, we have a new member of the family, his name is Cooper, वो आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं, and then it's so ये किसी भी बंदे को entertain रखने के लिए this is something that we have. And this brings us to the end of our lecture. Thank you very much, and I'll catch you guys later on.